नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु A.T.P में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हम केवल रीड करने वाले। जी हाँ, बहुत से लोग सोचेंगे सर ट्रांसलेशन में फायदा है, रीड में क्या फायदा है। जी हाँ, रीडिंग में भी बहुत ज्यादा फायदा है। क्या फायदा है आपको? ट्रांसलेशन वीडियो तो हमेशा लाते ही रहता हूँ, बट बीच बीच में ऐसी वीडियो आपको सुनना इसलिए जरूरी है कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग आपको करना आ जाएगा। ट्रांसलेशन में हम क्या होते हैं, 2-4 वर्ड्स पढ़ते हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होता, हम ट्रांसलेशन करते हैं, वर्ड मीनिंग बताते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो वहां पे बीच बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं वहां पे हम। तो वहां पे जो फ्लुएंसी होना चाहिए, जो फ्लुएंट वे पे आपको पढ़ना आना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते हैं। तो आपको रीडिंग भी आना चाहिए ट्रांसलेशन के अलावा। तो रीडिंग तो सबसे पहले जरूरी है। तो आज हम रीडिंग सीखते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है, और इस प्रकार से आपको नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाना वो भी आपको बताने वाले। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, डायमेट्रिकली, इस प्रकार से नए नए वर्ड्स आएंगे, ये भी आप लोग नोट करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था बट माइक को लगा नहीं पाया था, इसलिए फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। रिवॉर्ड फॉर गुड डीड। बुलबुल वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल। शी डिडंट नो एनी चीटिंग और ट्रिकिंग, बट हर सिस्टर रीना वॉज डायमेट्रिकली अपोजिट. She was tricky, cheating and lazy. Poor Bulbul was an orphan. Her mother had died when Bulbul was just a baby. Reena was her stepsister. Bulbul lived with her stepmother and stepsister. Her father worked in a city. He came home only once a year. ठीक है, आपको समझ भी आते जा रहा है। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें समझ भी आते जा रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। The stepmother had no love for Bulbul. She made Bulbul do all the housework. Reena and her mother sat on the bed all day long. All they did was resting and eating. Bulbul toiled without getting a rest, and she got only crumbs to eat. But Bulbul never complained. Reena took advantage of it, made false complaints against Bulbul to the mother, and the mother would thrash poor Bulbul. One day, Bulbul got very tired after a hard work. She felt pain in her stomach due to hunger. She said to the mother, "Mother, my stomach is aching. Give me something to eat." ठीक है, इतना स्पीड ठीक है। इससे क्या होगा, फ्लुएंसी जो होती है वो आप लोगों को समझ आ गया कि एक्चुअल पढ़ना क्या है। ना बहुत जल्दी ना बहुत ज़्यादा धीरे पढ़ो, वैसे कि सामने वाले को समझ भी आए। यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। मदर रिमार्क्ड, यू हैव स्टमक एक एंड यू वांट टू ईट, इट विल गिव यू मोर पेन. Bulbul felt like weeping loudly. She was starving, tears rolled down her eyes, but she didn't cry. She went on working in spite of the increasing pain of hunger. Due to hunger, she could not go to sleep. She decided to leave home. She slipped out of the house in the darkness. She walked and reached a forest. She was dying of hunger. Bulbul saw a jamun berry tree in front of her. She climbed up the tree somehow and ate berries. She got down, having eaten to her heart's content. By then, the day had broken. She began playing around. Bulbul was very happy because there was no one to stop her. She was enjoying herself. At home, she was never allowed to play. When the night fell, Bulbul felt scared. She found a niche under a tree and snuggled into it. The girl was shivering. She closed her eyes and tried to sleep. Suddenly, she saw a kind of flash in front of her eyes. She opened her eyes and saw an old woman with her hair hanging loose standing before her.
She had a white sari on and her hair also was snow white. Bulbul was frightened, but the old woman said sweetly, "Don't fear me, dear girl. What's your name?" "I am Mother Winter. I bring in cold season. Do you like cold?" Bulbul replied, "My name is Bulbul. I love the winters. It gives me oranges, grapes, carrots, and all the tasty vegetables. I relish, I enjoy basking and playing in the winter sun. Peanuts taste delightful. I adore you, mother." Her talk pleased the old woman. She gave Bulbul a velvet blanket and said, "Wrap yourself with it. You are shivering. And take this bag. It contains money, gems and lots of ornaments." गहने को ornaments कहते हैं. "That's my gift to you. Live happy." Mother Winter vanished and handing over the gifts to Bulbul. The parents very delighted Bulbul. She kept the bag by her side and wrapped around the velvet blanket. She felt warmed up and soon fell asleep. Only a short time later, she felt heat. She raised the corner of the blanket and peeped out. She saw a young lady standing there. She was in green and yellow dress. Her eyes sparkled कहा जाता है चमकना. She spoke to Bulbul. "Do you know who I am?" Bulbul shook her head. The lady informed, "I am Miss Summer. I bring the summer season. Tell me, how do you like summer?" Bulbul was now feeling hot. She cast away the blanket and said, "I like the summer. It gives me sweet fruits like mangoes, melons and pineapples. I like sour unripe mangoes." Sour है ना, खट्टे को sour बोलते हैं, unripe यानी कच्चा. 2. Ice creams just taste wonderful during hot days. Summer is great. Miss Summer laughed, sounding like jingle of bells, and crooned, "Really, you are a sweet girl. You made me happy. I want to give you some gift. Here, take this plate. Put your finger on this plate and you will get whatever you wish to eat." Miss Summer departed. Bulbul was very happy that 2 seasons were pleased with her and gifted her so wonderful things. Bulbul didn't pride over them. She was a simple, peaceful girl. She tried to get some sleep. Suddenly, she heard the chirps of the bird. Chirping जो होता है चहचहाने की आवाज. And knew that the morning was arriving. She was feeling hungry. She took out the magic plate and put her finger in it. Then she wished for milk. To her delight, she saw a glass of milk appearing on the plate. Before she could finish her milk, she felt drops falling on her head. Bulbul raised her head to find a beauty in green dress standing there. She was close by. Her dress was wet and drops fell from her hair. She asked, "Did you recognize me, girl?" अब आप समझ गए कौन होगी. ठंड गर्मी तो हो गया, बरसात ही होगी. Bulbul looked at her puzzled. The woman said, "I am Madam Wren. I bring greenery all around. I put life in trees and plants. How do you like rainy season?" Bulbul giggled. Aha, I love rainy season. I dance and sing in the rain. Floating paper boats in rain water in fun. Rainy season is lovely, Madam Rain inquired.
Does your mother let you play in rain? Does she love you, girl? Bulbul replied, Very. My mother is a good woman. She lets me play and sing. I want to go to her. Bulbul was really crying. Madam Wren patted her and said, Don't cry. थपथपाने को patted बोलते हैं. Baby, I give you this magic mat. You can get to your mother, sit on it, and it will fly you wherever you wish to go, and take a magic ring too. It will always protect you from troubles. Madam Rain vanished. Bulbul really wanted to go to her stepmother. She unrolled the magic mat and sat on it with other gifts. The very next moment she was in her home. Bulbul found that the stepmother was telling the neighbors that she had run away, but finding the girl there silenced her. She was not pleased, but she looked delighted when Bulbul gave all the gifts to her. Bulbul revealed to her mother all that had happened with her. The mother tried to pull the magic ring off the finger of Bulbul but failed. She decided to send Reena to the jungle to get those wonderful gifts. Reena didn't like to go. She was feeling scared. But the mother's insistence है ना, जिद्दी जबरदस्ती को कहा जाता है, and the greed for magic gifts made her go to the jungle where Bulbul had gone. अब ये भी जा रही है, मुझे भी ऐसा मिल जाए. At night, in the same way, old woman Winter appeared and asked Reena how she liked winters. Reena was never thought to speak politely. She thought that Bulbul had got those gifts for speaking truth. So Reena said with a bad face, I don't like winter. It makes me shiver. ठीक है, ये किसी का दिल नहीं रख रही है और वो सबका दिल रखती थी, किसी को बुरा नहीं बोलती थी. हाँ, मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये पसंद, लेकिन ये सीधा सीधा बोल रही है मुझे ठंड पसंद नहीं है. Cold winds make my nose run. Nose run नाक बहना. My lips crack and taking bath in the winter is a torture. Winter is awful. It keeps me in bed like a sick girl. It made Winter angry. She gave Reena a bag and a blanket and disappeared. Reena tried to wrap the blanket around her, but it hurt as if it were made of thorns. कांटों को thorns कहा जाता है. The bag was full of worms. Worms है ना, वो केंचुआ होता है ना, मिट्टी के अंदर वाला. She threw away both things in disgust. Meanwhile, Miss Summer arrived and asked Reena what she thought of summer. Reena spat. Yuck! Summer is filthy. I always sweat. It is all smelly. You can't go out to play due to heat. Summer is really hell. Annoyed Miss Summer gave Reena a plate and disappeared. As soon as Reena put her hand in the plate, it teemed with hair worms. Reena threw the plate away. The worms made her feel sick. Then Madam Rain appeared and asked Reena what she thought of the rainy season. Reena was puzzled. She didn't know what to say. She cursed. It is a horrible time. There is mud all around. The roofs leak. You can't go around. It is full of flies and mosquitoes. Reena's remarks angered Madam Rain. She gave Reena a mat and ring. She sat on the mat and it felt burning hot. Meanwhile, she put the ring on her finger. There was a flash as if short circuited and Reena was engulfed in flames. Luckily, her mother reached there and fire was put out with difficulty. Reena had got
severe burns. She lamented, "Mother, you never taught me good manners. I always spoke ill of Bulbul and ill-treated her. God has punished us for that wrongdoing." Bulbul came to her and lovingly caressed her. The mother realized now how good Bulbul was, and she felt sorry of her mistreatment. I was a mother, and for me both girls should have been equally dear. She thought by not teaching Reena a good thing, she had done an injustice to her daughter and herself. She made up her mind that she would treat both the girls as her own flesh. Reena recovered and all three lived peacefully and joyfully. तो यहाँ पे आज की स्टोरी एंड होती है। अब आप देखिए 16 मिनट में, है ना, 1 2 3 4 5 पेज मान के चलिए, इसको एक पेज मानते तो 5 पेजेस की जो आज की स्टोरी थी वो हमने पढ़ लिया, केवल रीड किया। अब सोचिए इसको मैं ट्रांसलेट करता, यदि, है ना, एक एक वर्ड की मीनिंग बताता तो 5 पेज 16 मिनट सिर्फ पढ़ने में लगा, एक एक वर्ड की मीनिंग बताता तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता। इसलिए जब लंबी स्टोरीज होती है तो मैं उसे रीडिंग के लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि छोटी स्टोरी को केवल रीड करें तो तुरंत खत्म हो जाएगा 2 मिनट 5 मिनट में। बट हम लंबी स्टोरी रीडिंग के लिए लाते हैं, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको ये अपने आप की आप परीक्षा ले सकते हैं कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या क्या है। बहुत सारी ऐसी वर्ड्स की मीनिंग होगी जिसे आपको नहीं पता होगा, टॉर्चर हो गया, ऑफुल हो गया, बट इससे होता क्या है, आपको रीड करना आता है। इसे आप कैसे पढ़ेंगे, टॉर्टूरी, मतलब कुछ किसी को नहीं आता तो क्या किस टाइप से पढ़ेगा, अजीब टाइप से पढ़ेगा। बट हमें पता है कि TURE को चर पढ़ते हैं, नेचर, फ्यूचर, है ना, मॉइस्चर, तो चर पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका टॉर्चर। तो जब हम, आपको रूल भी नहीं पता है कोई बात नहीं, बट अब जब मुझे रीडिंग करते हुए सुनते हैं आप रिपीट करते हैं तो आपको भी रीडिंग करना धीरे धीरे आते जाता है और आप फिर अच्छे से अच्छे लंबे से लंबे वर्ड्स को भी आराम से आप पढ़ पाते हैं और ऐसे फ्लुएंटली आप इंग्लिश पढ़ पाओगे। और जब आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, रीड करना आ जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन तो आपको वीडियो में सिखाता हूँ, फिर रीडिंग, ट्रांसलेशन सब चीज़ हो पा रहा है। और आपको जब पढ़ना और रीड ट्रांसलेट करना आ गया तो सीधी सी बात आप लिखना सीख जाओगे, क्योंकि उससे क्या होता है, बार बार आप उस वर्ड को देख रहे हो, उसके स्पेलिंग्स आप देख रहे हो, उसका मीनिंग आप जान रहे हो, तो जब आप लिखते हो तो आपका माइंड में रहता है, हमेशा देखा हुआ याद रहता है ना, अच्छा इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, तो आप लोग की इंग्लिश उससे बहुत अच्छी सुधर सकती है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो रीडिंग, आज की क्लास से बुक रीडिंग क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बुक्स का भी, और इसके साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे इस स्टोरी का PDF मैं दे दूंगा। आप लोग फिर से रीड करके देख सकते हैं कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कहाँ पे अटक रहे हैं। हो सकता है 1-2 वर्ड मुझसे आगे पीछे हो गया हो, क्योंकि फ्लुएंटली मोबाइल से देख के मैं रीड करता हूँ तो उसमें कई बार होता है छोटा छोटा दिखता है, तो कई बार आगे पीछे हो जाता है। बट ऐसा हुआ हो तो आप कमेंट कर देंगे, या कहीं पे कुछ गलती हो तो कमेंट कर देंगे। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपने तरीके से, अपने तरफ से पूरे 100% आपको दूं और अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश सिखा पाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।